from 2.4 lakhs who are powering the vision of Digital India in the village. To continue with this session and to celebrate this remarkable journey, our Honorable Minister Shri Ravi Shankar Prasad had launched a song in Varanasi conference. This song captured the essence of resolve to transform rural India. This song is the CSC anthem. We should feel proud to be associated with world's largest network. So friends, we all hear the CSC anthem. कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल जीत लेंगे जी कभी। CSC माझी ओळख, CSC हमार पहचान। बिजली या पानी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, आगमन के साधन, यह विधा टेलीमेडिसिन से हो सर उठाए महिला ना हो किसी सहारे, हर गांव में है मजमा आधार पे हमारे किसी सहारे, हर गांव में है मजमा आधार पे हमारे। सरकार पास जाए क्यों आम बंदा जो हो, सरकार खुद ही आए, क्या हाल चाल बोलो। हो गर्व है हमें, वो जीत लेंगे जी कभी। CSC मेरी पहचान, CSC मेरी पहचान, भी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो अपने स्टेट का जो पजार लेकर आई हैं उसके साथ हमारे मंत्री जी श्री रवि शंकर प्रसाद जी का स्वागत करें और श्री दिनेश कुमार त्यागी जी का जो as we have literate approx 1 million people in digital literacy. So, we will now play a film on digital empowerment through Digital Saksharta Abhiyan. हम डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। टेक्नोलॉजी लोगों, समुदायों, व्यवसायों, देश और दुनिया को पूरी तरह से करना चाहता है। लेकिन इस प्रगति के बावजूद ग्रामीण भारत में लाखों लोग अभी भी इस डिजिटल युग का हिस्सा नहीं बन पाए। प्रकाश पेशे से एक पेंटर हैं, पर डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक की वजह से वो लगभग बेरोजगार हो गए। आजकल सब कंप्यूटर का जमाना है। अगर मेरे बिजनेस को, धंधे को बचाने के लिए मुझे कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा।
इसी दूरी को कम करने के लिए सरकार ने डिजिटल साक्षरता मिशन यानी NDLM दिशा की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर से कम एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर बनाया जाए। का एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम कर रही है। डिजिटल इंडिया उस बदलाव का एक बहुत बड़ा उपकरण है जिसके माध्यम से हम IT के आधार पर पूरे देश में आगे का रास्ता बना रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी भारत विविध देश है। छात्रों को प्रशिक्षित करने की एक महत्वपूर्ण पहल की है। जब मैं पहली बार वहाँ गया स्कूल पे तो ना वो मेरी भाषा समझ सक रहे थे ना मैं उनको समझा पा रहा था। तो हमने रिक्वेस्ट किया मैम से, हमारे एक इंटरप्रेटर के हिसाब से हम जो भाषा बोलते थे, हम अपनी तकनीकी कंप्यूटर की भाषा बोलते थे, वो साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैडम उनको ट्रांसलेट, धीरे धीरे बच्चे उसको समझने लग गए और हमको क्लास लेने में बहुत मज़ा आने लगा। पहले जब मैं गांव में जाता था तो बहुत लोग बोलते थे कि हमसे नहीं होगा इतना दूर पे। एक बार 2 औरतें वहां से आई, महिलाएं, तो उन लोग जब सीख के यहाँ से गई, बड़ा हिम्मत हुआ से। NDLM दिशा की महिलाओं को भारत का हिस्सा है। कंप्यूटर हम तो सीखे, हमको तो भरोसा हुआ ही, लेकिन हमको से ज़्यादा तो हमको लगा कि पूरे गांव के भरोसा हुआ कि आजकल के युग में मतलब कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। NDLM दिशा ने सरकारी योजनाओं के काम करने के तरीकों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को कंप्यूटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उन्हें डाटा संग्रह करने में आसानी हो रही है और इस वजह से सरकार को जमीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं को बेहतर करने की योजना बनाने में मदद मिल रही है। NDLM दिशा खाद्य एवं नागरिक मैं कंप्यूटर सीखने आई थी तो आज मेरा सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब मैं 60 साल की हूँ और कंप्यूटर सीख चुकी हूँ, वैसे कोई भी हो सीख सकता है। VLE अबरार वोरा दिव्यांग होने के बावजूद अपने CSC पर लोगों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं। घर घर जाकर उन्होंने NDLM दिशा के बारे में जागरूकता फैलाई, दिशा के दरवाजे तक पहुंचाया है। VLE स्नेहलता राजस्थान के बंजारों को उनके शिविरों में जाकर प्रशिक्षित करती हैं। तेलंगाना का अकोली गांव NDLM दिशा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस गांव को 100% साक्षर बनाया है। तो NDLM आने से पहले गांव में डिजिटल लिटरेसी के बारे में, डिजिटल डिवाइस के बारे में, फ़ोन क्या था, कंप्यूटर क्या था, उसके वजह से गांव में कुछ भी मालूम नहीं था उन लोगों को। ट्रेनिंग लेने के बाद डिजिटल डिवाइस किसे बोलता है, स्मार्टफोन से क्या कर सकता है, ये कंप्यूटर बोले तो क्या है, उसके बारे में उसको समझ में आया है। सिटी में ऐसा, शहर में ऐसे लोग हो तो शहर में सीख ले रहे, मगर उसमें सरपंच भी है समस्या। एक घर में एक आदमी ट्रेनिंग लेने के बाद वो पूरा 160 हाउसेस में 160 मेंबर्स 100% डिजिटल लिटरेसी हुआ। आकोली के तरह और 2-3 गांव मैंने ले लिए है, मानागाड़ा है, ऐसा 4-5 गांव लिए है, उसे भी 100% डिजिटल लिटरेसी बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। NDLM दिशा से पेंटर प्रकाश को असंख्य अवसर मिले। कंप्यूटर का मुझे ABCD भी नहीं आता था। अब मैं अपना डिज़ाइन कंप्यूटर पे ही करता हूँ। कंप्यूटर से बनाया हुआ डिज़ाइन जो मैं व्हाट्सएप से माध्यम से मैं कस्टमर तक का भेज देता हूँ। 85 लाख से ज्यादा 20 लाख लोगों को प्रमाणित किया गया है। प्रशिक्षित छात्रों को मान्यता प्राप्त एजेंसियों जैसे नाइलेट, NIOS, HKCL, ICTACT और NIS अपने मिशन को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए NDLM दिशा कई अन्य संगठनों का सहयोग भी ले रही है, जिनमें प्रमुख है नेस्कॉम फाउंडेशन, इंटेल, दैनिक भास्कर, HP। अगले 3 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं, NDLM दिशा
से बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। To begin this processing, I now invite Dr. Dinesh Kumar Tyagi, CEO, SPV, to give a welcome address. Honorable Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji of Information Technology Ministry and for Law and Justice, Madam Anna Sundarajan, Secretary, and various officials, VLE Bhaiyo and Behno. Today's function is basically showing and reflecting what the ICT can do in enabling people to become a real good enterprise, especially in rural India. How does ICT enable women empowerment? Today's the entire program was focused on enabling women to become an entrepreneur and run an enterprise through the intervention of an ICT. Last year, sir, when we organized the workshop, we have women who came from across, they came with their husband. And they come from all remote locations, from sometimes they have not even seen daily. We are all from the VLE community, sir, grateful to you that in the entire movement of CSC, you actually ignited people's mind. We were in slumber at some point in time, we have woken up, and we can be done, create and enable government to use the format for helping citizens. You have seen this NDL film, it's only a single story, but there are enormous stories of women who have done phenomenal work. We have these women who now run Aadhaar center of their own. They are technically qualified. There are girls and creative. They are such men, and they are actually soldiers for Digital India to take it to the last mile, to enable people to try and generate that enthusiasm, that thing. And the last but not least, one of the things which they share with me in confidence, by bringing using ICT to deliver services, this country has actually gone to a leap forward in removing corruption to a large extent from that limited mass of people who access services. They don't have to go to government offices, they can go to CSC and avail. And this is actually borne by facts. So you see this change happening in rural India in own way in trying and addressing the concerns of the government. We're saying that let's make a corruption-free society. We are committed to the government agenda of making a corruption-free society, trying and removing this malice from this, and trying and helping citizens to get this service. We will work day and night to fulfill your vision and our Honorable Prime Minister's vision of creating an inclusive society, empowered society, enlightened society which are available. Digital CSC is a component of Digital India. CSC is not a scheme and program. Our minister has already said CSC is a movement. He calls it an Andolan. And that is how it to us, saying that we are the Sipahi and soldiers of the Andolan. That is what CSC is meant for. Common service centers are a change agent. And I think all over the world, I don't think there is a network of this nature. We have around 240,000 common service centers with the geographical equity across the nation and with the largest network in the world. We do many activities. The whole objective is to create three things, which I keep on mentioning. DBT, doctor, digital. The threes and these VLEs will do that. And in Spotted, we will be able to really transform and create one panchayat, every panchayat in this country which have a digital doctor, a digital banker, and a digital teacher. Thank you very much, sir, for coming and gracing the occasion. Our women VLEs are very enthused. They were waiting for 2 days to meet you, listen to you, and get further enthusiasm and encouragement. But I promise you, sir, they promise me, in all their centers in women, they will only employ girls. They will not employ boys. So you actually create. So we're creating that empowerment through the process of common. And most of them have 5 to 7 employees.
Thank you, sir. I now like to call Mrs. Aruna Sundararajan, Secretary, Ministry of IT and Electronics, to speak the few words of inspiration. Honorable Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji, Shri Dinesh Tyagi, CEO CSC SPV, and friends, I don't intend to make a speech. I only want to say that be proud of the achievements that the CSC entrepreneurs have achieved. You are our confidence. You are our empowerment. You indicate to us that we are indeed on the right track. And on this occasion, I only want to ensure that you, in turn, can enable 1.25 billion Indians. Of change, women really is a compilation of stories of 100 women VLEs from across the country who have overcome the odds of emergence, successfully rural entrepreneurs under the CSC scheme. Give them a big applause. आप सभी लोग ये मैगजीन CSC स्टॉल से कलेक्ट कर सकते हैं, whomsoever is want to take. Ladies and gentlemen, now I invite Honorable त्यागी, ladies and gentlemen, जरा पहले हाथ उठाओ तो कितने VLE आए हो यहाँ पर? Very good. हाथ डाउन करो. Good. I would like the international delegates to see their enthusiasm. And I was not supposed to come in this program. As a minister, I was supposed to inaugurate and supposed to give the valedictory address today. But I consciously decided that I will come in this program because the agents with all of you of the IceGov come from. When I became the Minister of IT, Digital India, so when I was school departments functioning, I came across this wonderful movement which we say Common Service Center. What are they? They are digital kiosks who are delivering digital services on the ground in the hinterland. Their number was around 70 to 80,000. I started pushing them. Now their number is 200,000. And very soon they will be there in every Gram Panchayat of India, cluster of villages, 250,000. This movement started and I'm very proud of them, how they reciprocated the trust which we shared with them. Do you know they are delivering 300 services today through their small kiosk, which we say Common Service Center or VLEs, whatever you call them. This starts from making passport to train tickets, to delivery of results, to banking, to making Aadhaar cards, to having land records being delivered on the ground. Thereafter, I started using them in various facilities. Uber, the great taxi company, was very impressed by them. Now an MOU has been signed between the VLEs and the Uber to pick up drivers from the hinterland of India who are properly trained, licensed and police verified. Patanjali Yoga Shastri, the famous Ramdev yogic guru's facility of distribution of our Indian system of medicine is also very popular. They have been commissioned.
Why I am very proud of these ladies is, and I would like IceGov to really understand as a point of case study, the enormous potential of these young girls and women. You saw one, Satamma Devi. I consciously promote them. Show my photograph less, show their contribution more in all the documentaries. Who is she? She's a Bidi Majdoor, the lowliest of the low. In Telangana, illiterate. I learned to my present surprise that she has become digitally literate. I tweeted to congratulate her. She became famous, an interpreter. I asked her how she chose to become digitally literate. And the replies which she gave, my friend from the IceGov, is a powerful statement of how India is changing. She said she had a grandson and a son who is a plumber in Dubai, and I used to miss my grandson. And I was told by friends, if you want to talk to your grandson and see his face, learn to operate the Skype. And to operate the Skype, I became digitally literate. She is 65 plus, 70. You have seen others. Digital India, which we have ushered in India, has become a digital movement of empowerment. I said in my inaugural address. And these, my VLEs, delivering services, and we have made them a partner in the skilling of the country. We have made them a partner in about 10 million people digitally literate. Now we have to undertake a massive program of making nearly 60 million Indian digitally literate in the coming 3 years, in which they have to play a very crucial role. And what potential they have, I would like the IceGov representative to make a note of it. Digital payment movement is going in a big way in India. You know, India is also emerging as a big center of make digital payment. You'll be happy to know they 3 million Indians in 2 months and nearly half of that shopkeepers. That's how they work. And therefore you see me here. The reason as to why I briefly touched upon their potential is that if IceGov is a body designed to oversee electronic governance in the world under UN aegis, how India's experiment with new innovations, new ideas, is something to be reflected upon. And maybe, if possible, this model can be also replicated elsewhere. आज तुम लोग के लिए हमको एक घोषणा करनी है, बड़ी घोषणा कर रहा हूं, सुनोगे? अभी मैंने तय किया है, मेरे मन में चल रहा था कि आगे से हम नीति बनाने जा रहे हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर का उपयोग करने के लिए कोई कंपनी या दुनिया की कोई कंपनी आपकी सेवाओं का उपयोग कर सकती है. ठीक है? बात समझ रहे हैं आप? आप लोगों ने 20 आधार कार्ड बना दिया. आपकी जिम्मेवारी ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट टू 500,000 पीपल. You must remember that. In 10 people, 5 people, 8 people, 20 people are working with them. PP, come. तो ये मैं तुम लोगों से बता रहा हूं. देखो, मैंने कहा तुम लोग चाहता हूं. आज देखो मैंने विदेशों के सामने क्या तुम्हारे पक्ष में बात किया. अब मुझे लगता है कि दुनिया में तुम्हारी चर्चा होगी, तो दुनिया में तुम्हारी चर्चा होगी तो अच्छी चर्चा होगी. फिर बड़ी बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान बड़ा मार्केट है, तो वीएलई की सेवाएं लेंगे, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बनोगे, आप उनके डिलीवरिंग एजेंट बनोगे, आप उनके ट्रेनिंग सेंटर्स बनोगे. तो इसके लिए आपको अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी बढ़ानी पड़ेगी, अपने कंप्यूटर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अपना अकाउंटिंग ठीक करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा. और देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हिम्मत करोगे तो देश अपने आप बदलेगा. और मेरी सबसे खुशी इस बात की होगी कि मैं जब हिंदुस्तान घूमूंगा तो मैं वीएलई का हालचाल जरूर पूछता हूं. सुनते हो कि नहीं सुनते हो? मेरे बारे में सुनते हो ना? तो मैं वैसे वीएलई में एकाएक पहुंच जाऊंगा
जिसके पास कितनी इंडियन कंपनी आई है और कितनी विदेशी कंपनी आई है, समझ गए? कंपनीज टू बी फॉर देयर सर्विसेज टू बी यूज, सेलेक्ट कर करके अच्छे लोगों को हम भेजेंगे, और एक ही बार नहीं भेजेंगे, कई बार भेजेंगे, ठीक है? तो आप लोग को अमेरिका भी भेजेंगे, उसका एक सिस्टम बनाएंगे, पक्का? देखो मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त रहती है, मालूम है ना क्या शर्त है? कि मैं 40 कदम चलने को तैयार हूं, तुमको 20 कदम चलना पड़ेगा मेरे साथ, है ना? यह करना पड़ेगा। और मेरी अपेक्षा तुम लोग से यह, और मेरी खास करके बहनें जो यहां पर हैं, कि हम वीएलई मूवमेंट को हिंदुस्तान का एक ऐसा मूवमेंट बनाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ देखे कि हिंदुस्तान का सीएससी मूवमेंट क्या है। ये जो अभी फिल्मों में दिखाई पड़ा है, ये दुनिया को दिखना चाहिए। तो इसीलिए तुम लोगों से बात करने में आया था, ठीक है? आज विदेश के मेहमान आए हुए हैं, उनके सामने ये बात बताओ, लोग देखें और एक नए आत्मविश्वास के। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच कुछ डिजिटल चैंपियंस, कुछ एक वुमेन्स ऐसी हैं जो कि जिन्होंने डिजिटल इंडिया या एनडीएलएम, हमारा जो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन चलता है, उसके अंदर शिक्षा लेकर अपने सोशल एटीट्यूड्स को और अपनी शिक्षा लेकर उन्होंने कई जगह नौकरियां प्राप्त की हैं और अपने आप को एक वुमेन एम्पावर में इंक्लूड किया है। तो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर Shri Ravi Shankar Prasad and Shri P.P. Chaudhary, Secretary State, Minister of State, to honor them by giving away the mementos. I'm please sing with one of our VLE, Sadhna. Khushbu Sharma. Next is from Dhamtari, Chhattisgarh, Om Kumari Sahu, Thaneshwari Yadav. They are working with RVLE Tanuja. Ladies and gentlemen, I would request you to clap very strongly for them. They are children of farm laborers. यार अबे तुम्हारा ओ बेटा ये लो, इधर आओ, सामने सामने देखो, एक तुम्हारा है, लो लाओ उसका, जा जा बेटा, थैंक यू। राजस्थान अलवर से तरुणा अग्रवाल एंड मनीषा देवी. They are working with the VLE Gokul Saini. Give them a big applause. Example, and now they are working as supervisor in the Common Service Center. I now would like to invite Saira Pailin and Vanfi from Meghalaya on the behalf of all VLEs to present a beautiful painting to Honorable Minister Shri Ravi Shankar Prasad. Thank you. To Chaudhary. I again like to call Sarai Pailin
to present to Madam Aruna. I invite Honorable Minister is to go. There's today Parliament session. Some of the women really wanted a photograph. So please, you can quickly come and then go, and then we start the session. Zero mathematics to many other India's times to make India a digitally empowered society. And therefore, movement globally and Digital India movement makes India an ideal host for the IceGov 2017. Through Digital India, we are creating a very use of digital technology, which the IceGov is promoting globally. And therefore, this conference is a great opportunity for the world to know India, that have a first-hand knowledge of the global experience. The global and the local are going to meet in the historic IceGov 2017. I welcome the delegates from nearly 32 countries. Welcome to India. See the extraordinary march of India of making India digitally Sabka Saath, Sabka Vikas, namely development with the cooperation of all. With that larger perspective, welcome to you in India. Literacy and challenges for rural India. Running a very big Aadhaar center, that is the Permanent Enrollment Center, and she has actively participated in the Digidhan Abhiyan, which was conducted by CSC SPV. So I invite Mrs. Anis. Very good afternoon, ladies and gentlemen. My respected CSC officials, all other dignitaries who came all over the world, I am honored to, though my subject is digital literacy and challenges for rural India, I want to share something
which is very special and which has given me this kind of job, because when digitization was announced, I did, as per the CSP, as I running CSP of Bank of Baroda, I opened 750 accounts of tea garden workers. Government of India announced that 150 labor satisfaction that to some extent I have served the society through my little effort. They have accessed their wages through bank account, and and at the same time it also prevents the corruption, because laborer and poor people, they were totally illiterate, and the masterstroke of Mr. Modi was that to deliver their wages through bank ground level. Now present the education, digital literacy and challenges for rural India. I have बहुत सारे डिजिटल लिटरेसी किए हैं, NDLM किए हैं, साइबर ग्राम प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ, वहाँ पे जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डिजिटल लिटरेसी NDLM प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ, बहुत सारे एम्फसाइज कर, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एनरोल किया आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जो वंस जोर दिया कि बहुत सारे मिडिल एज वुमन है जो हमारे सोसाइटीज़ में भी है, जो कुछ ना कुछ लिटरेट मतलब साइबर जो डिजिटल लिटरेसी है जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि टैब व्हाट्सएप कैसे करते हैं, टैब कैसे वो जानना चाहते हैं। आने लगे थे कि मैंने NDLM कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और इन लोगों को एनरोल करना शुरू किया। मेरे घर के कुक हैं, मेरे घर के स्वीपर जो है उनको मैंने एनरोल किया, उनको मैंने थोड़ा डिजिटल डिवाइस के बारे में बताया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट मतलब अभी भी मेरा चल रहा है वो है साइबरग्राम प्रोजेक्ट। साइबरग्राम प्रोजेक्ट ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये नॉट रेडी करने के लिए मैंने ऑडियो वीडियो फर्स्ट प्रेजेंटेशन 2-3 दिन ऐसे ही चलाए। उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट आने लगे, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स थे वो आने लगे। ऐसा एक दिन ऐसा आया कि स्टूडेंट में बहुत सारे बच्चे आके एनरोल होने लगे। तो ये मुझे मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन की बात है, और ये मुझे बहुत इंस्पिरेशन भी देती है कि टू सम एक्सटेंट मैंने कुछ तो काम किया जिससे समाज को थोड़ा बहुत सहायता मिल रही है मेरे थोड़े से एफर्ट के ज़रिए। ये देख रहे हैं मैं NDLM ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैं थोड़ी सी प्रेजेंट 275 आंगनवाड़ी वर्कर्स को मैंने मिडिल एज्ड लेडीज़ है घर के, जो खुद ब खुद मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि मुझे मेरे बच्चे हाउ टू ऑपरेट वो किए हैं, एनरोल किए हैं। दिस इज़ द साइबरग्राम प्रोजेक्ट, वो माइनॉरिटी अफेयर्स का यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वहाँ का बेनिफिशियरीज है। The scheme is intends to cover students of class 6 to 10 belonging to minority communities notified as the section 2C of the National Commission of Minority Act 1992। यहाँ पे मेन जो साइबरग्राम प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू उन लोगों को हाउ टू एक्सेस devices as well as
as well as to aware them the नहीं थी इंटरनेट. I'm very happy to be a part of this digital movement and to thank CSC to giving me this kind of opportunity to serve the nation. Thank you. Thank you, Mrs. Basu, for sharing the experience. If you see the statistics, as per Census of India and National Sample Survey Organization, 6% of the rural population do not have computers, and it is estimated that she has got one. Thank you, Rishikesh sir. Honorable stage and one present here, my e-pranam to all of you and welcome all the guests to my Digital India. I am Tanuja Raichura from representing many changes because CSC important changes it made is empower the woman. The most remarkable thing this is. And so my topic is women empowerment through digital initiative. And this is a digital empowered woman's logo of my presentation. So first of all, from the behalf of every woman of world, I thanks to all of those who are involved or support women empowerment. Contents of my presentation is pre-education growth that was seen in 13 and 14. It includes urban homemakers and rural women. And then post-education growth that was for 15 and 16, women empowerment through mobile and computers. Some unique examples of my CSC. Up to 2013, women were enough aware about the perfect use of mobile, especially the urban women. They saved not only relatives and friends' mobile number, also of grocery, laundries, plumbers, carpenters, homemade, milkmen, helplines, parlor, and before all of these, their husband. 24-hour remote control on their husband. So these things are not minor. This means the woman is not dependent on her husband computer. In 2015, National Digital Literacy Mission brought a revolutionary change in women empowerment. Then, in 2016, cashless financial literacy is involved with NDLM, and it added some more. Here are some literacy. You can see women, men. This is of a, and this one is a slum area of my ward, and this one is this is girls students, and this is of a Naxalite belt. The digital means to empower the women are two, mobile and computer. On the basis of this, I categorize growth in four. Empowerment of rural women through mobile, empowerment rural through computer, and in this graph, numerical 13, zero growth are marked in rural women through computer,
Less than 20% in urban women through computer, 20% in rural women through mobile, and 40% in urban women through mobile. While in 2014, through computer, and it is because of the online services, the distance is decreased, and 20% in rural women through mobile, because they still use the mobile of their family members and their husband, 20% in urban women through computer, and 80% in urban women through mobile. Prompt about the messages of government services. Now, some examples of my CSC. This is Purnima, which was construction labor before computer learning. This is still my staff. This is Om Kumari Sahu. She was farming labor before computer learning. This is Rajini Mahar, and she is working and learn computer through NDLM. She is Kusum Sahu, is still working in my center. Helps me to and computer NDLM, and after that he gave training to the women of her village. And this is Govindi Bai. You have seen here picture of her, and she is working with a tablet smartly. This is Jamin Bai. The unique point is that she was totally illiterate before NDLM, and she is a clinic of a private hospital, and she is, you can see, handicapped girl. Computer and using cashless transaction, she is digital literate, and she is my homemade, my Kamwali Bai. And thank you, and happy Holi. Digital India is growing. Digital India is progressing. Digital India is reaching out to more and more people, touching their lives. Most importantly, Digital India is changing the way we work. One of the foundations of the Digital India initiative is built on the philosophy of openness and sharing. India has now become one of the first countries to create a dedicated collaboration platform for e-governance that is truly global in nature. Welcome to OpenForge, a public collaborative software development platform that is made for the world to show it cares for its people. Open source and community development practices are used by leading internet platforms like Google, Facebook, Twitter, and Wikipedia while building their products. The government has brought the same open, share, and collaborate philosophy to e-governance. OpenForge aims at building innovative, modern, standardized, and high-quality software through the use of best information sharing, tracking, and communication tools. Most importantly, it is a high-quality asset that of our government. 50 projects are already using OpenForge, notable amongst which are DigiLocker, Government e-Marketplace, Smart City Municipal Suite, and ERP Next. But OpenForge is not only for the government, it is also for communities to build their applications that bring about change and betterment for the masses. Even the global community can reuse the resources available on our OpenForge platform and help transform the lives of millions across the world. Welcome to OpenForge. Build together. Grow faster. IceGov 2017, New Delhi, India. Come, shape the future with us.